Hello and welcome to my today's video. Before jumping on to the stocks for tomorrow, I'll quickly tell you what happened last week and क्या changes हुए, what did we do in the strategy, and how is the portfolio doing, etc. etc. So first of all, the objective when we started 2 weeks back, the objective was to make a stable portfolio. बहुत कम changes हो तो हम लोग ने जब when we started, right, we started with top 15 stocks. उन 15 स्टॉक्स में जब हम इवेल्युएट करते थे वी वर डूइंग इट एवरी डे फॉर द नेक्स्ट डे फॉर द अपकमिंग डे. तो होता क्या था कि चर्न बहुत ज़्यादा था. टॉप 15 लेते थे. इफ स्टॉक वॉज मूविंग फ्रॉम 11th पोजिशन टू 15th और टू 16th पोजिशन आई वुड से, तो हम लोग उसको निकालते थे, स्विच करते थे विद द वन जो उसकी पोजिशन पे आया है. तो ये एवरी डे इट वॉज हैपनिंग विद 3-4 स्टॉक्स, 4-5 स्टॉक्स. तो हम लोग ने इसमें बैकएंड में थोड़े से चेंजेस किए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा चर्न वॉज रिड्यूस्ड. सो 5 स्टॉक्स इन अ डे ना होकर के 3 स्टॉक्स, 2 स्टॉक्स, 4 स्टॉक्स चर्न फिर भी हो रहा था. बट वो एज पर दी ऑब्जेक्टिव अलाइन नहीं था, ड्यू टू विच आई डिसाइडेड टू मेक अ पोर्टफोलियो फॉर अ वीक इंस्टेड ऑफ एवरी डे. सो वॉट आई डिड वॉज लास्ट मंडे आई मेड फ्यू चेंजेस एज पर द वीडियो. उसके बाद आई केप्ट द सेम पोर्टफोलियो फॉर the whole week. Week was good. Last day was not good, though our portfolio performed really well. And उसमें हुआ क्या कि जब एक वीक के लिए रखा तो थोड़ा सा स्टेबल पोर्टफोलियो मिला. नाउ आई ऑल्सो टेल यू कल का क्या स्टॉक्स है. पोर्टफोलियो टिल डेट फ्रॉम द टाइम वी इन्वेस्टेड 2 weeks बैक कितना चल रहा है, कितना बेटर हो सकता था, बेटर क्यों हो सकता था, आई विल टेल यू. सो जो स्टॉक्स चर्न हो रहे थे, लेट्स से वोल्टास वाज इन आवर पोर्टफोलियो. So it got out of the portfolio and in fact Coromandel got out of our portfolio. उसने पोर्टफोलियो के बाहर आने के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म किया. That got missed completely. तो पोर्टफोलियो का रिटर्न जितना मैं आपको बताऊंगा इट इज़ वेरी गुड, बट जितना मैं आपको बताऊंगा उससे ज़्यादा इजीली हो सकता था. 50-60% ऑफ दैट परसेंटेज इंक्रीज हो सकता था. सो लेट्स जंप ऑन टू द प्रेजेंटेशन and quickly take you through the top 15 stocks, the portfolio performance and the other things. Okay, so first of all, this presentation and the name of the stocks that I am going to take are strictly for educational purposes. So I am not recommending you to invest in any of these stocks. Request you to kindly do your proper due diligence before making any investment. And moving on to the next sheet. इस शीट पे दिस इज द स्ट्रैटेजी एज डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल. देयर इज नो चेंज इन स्टॉक सिलेक्शन मेथोडोलॉजी. बैकएंड में थोड़े से चेंज किए थे बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स. दैट रिमेन्स टॉप 15. If we talk about weighted allocation, it remains same. Stop loss rule remains same. It's 3% for every stock. अगर स्टॉक खरीदा है 100 रुपये में, उसका स्टॉप लॉस होगा 97 रुपीज़. अगर वो बढ़ करके 110 हो गया है in the previous closing, then the stop loss for that stock would be 3% of 110 rupees. इसके बेसिस पे हम प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे. And there is a little change in cool down period. As I told you that earlier we were doing it on daily basis. Now it is on weekly basis. So because of which cool down period अब इसमें exist नहीं करता. So moving on to the next page. This is the list of the stocks for tomorrow's trading session. So first one is Dixon from consumer durable. Second is Glenmark. Trent is at 3 position, 3rd position now. TVS Motor from autos, Bajaj Auto from auto components and automobile. MCX financial services, Voltas consumer durables, Oro Pharma from healthcare, Bharti Airtel from telecommunications, Indigo Aviation. This is not Indigo Paints, this is Indigo Aviations. And Granules from healthcare, Sun Pharma from healthcare, ICICI from financial services, Coal India, metal and mining, Lupin from healthcare. ये list है for tomorrow, and the ones highlighted in blue have recently been added in the portfolio, which is Bajaj Auto, Bharti Airtel, Indigo, Granules and Coal India. And dropout stocks are Coalpal. In the bracket, the current ranking of that stock is mentioned. For Coalpal, it's 17. Taunt Pharma is at 16. Naukri is at 24. Lal Path is at 28. Motherson Sumi is at 20. So this is what I was telling you in the initial part of the video, that Coalpal, let's say अभी 17 पे आया, right? प्रॉब्लम यही आ रहा था, 17 पे आया तो हमने उसको स्विच करा.
एंड नेक्स्ट डे अच्छा परफॉर्म करके वो 15 पे आ रहा था, तो देयर वाज द कूल डाउन पीरियड। कूल डाउन पीरियड में हम उसको एक वीक तक ले नहीं पा रहे थे, तो हम लोग उसका जो अपसाइड था वो सारा मिस कर रहे थे, ड्यू टू विच जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस थी वो और भी अच्छी हो सकती थी। Anyways, moving on to the next page, which will tell you about the portfolio performance as of 23rd of August 24, which was last Friday, जब market ने इतना अच्छा perform नहीं किया. And look at the stocks on the left hand side. This was our portfolio on Friday. Just look at the stocks in green. Our portfolio performed good. It performed really well. So जब किसी ने perform नहीं किया तब Dixon ने 3.19% का return दिया, and there is one more, Bajaj Auto 4.96%. TVS Motor performed 2.24%, then Sun Pharma 1.43%, and MCX 1.82%. Third column, the returns are mentioned till date, which means from the day we started investing. That means 2 weeks back on Monday, we started our investment. So Trent has given 9.7% in last 2 weeks. Lupin is negative 1.2%. Then Glenmark has performed really well, 13.6% positive. Dixon 5.9%, and we have Taunt Farm 0.5%, ICICI GI 2.3%, Lal Path Lab negative 0.9%, Naukri negative 0.3%, Bajaj Auto 5.4%, Kolpal negative 0.8%, TVS Motor 8% positive, Sun Pharma 2.2%, MCX has performed really well 11.1%, Oro Pharma 4.1%. And the stocks that are mentioned on the right hand side of the screen, these were the part of the portfolio. Now these stocks are not part of the portfolio. So Granules ne perform kiya negative 0.8%, Voltas 0.4% positive, Petronet 0.8% positive, Zydus negative 1.8%, Coromandel stop loss trigger हुआ -3% का, उसके बाद स्टॉक ने दौड़ लगा दी बिल्कुल. Then Sun TV negative 3.3%. I decided not to place stop loss for this stock because I was sitting in front of the system, so thought कि मैं limit करके execute कर दूंगा, but उसमें late हो गया and 3.3%, so 0.3% extra हो गया. stop loss होता तो बच जाता, but anyways. Bajaj Auto 0.1%, वो same उस पे निकल गया price पे. Muthoot Finance 3.3% negative. Again, the same story happened as Sun TV. IPCL Labs 0.8% positive, ONGC negative 3%, stop loss trigger हुआ था. So our overall portfolio return was 1.93%, which is very very good, I would say. अगर इसको annually calculate करें, so it would come somewhere around 50%. अभी ये 1.93% could have been 2.5 or 2.75% easily अगर इतना ज़्यादा churn ना होता. So therefore we have changed the strategy from daily to weekly, and I believe it should go really well now. Instead of daily, our portfolio would now remain same for a week's time, and in between if some corporate action comes या कुछ बैड न्यूज़ आती है जिसके बेसिस पे स्टॉक बिल्कुल डब्बा गोल हो जाता है स्टॉक का, एंड वी नो वो उसने नीचे जाना है, आई ईदर अपडेट यू बाय अ क्विक वीडियो, और यू कैन ऑल्सो चेक द अपडेट ऑन द कम्युनिटी टैब अवेलेबल ऑन माई चैनल. वहाँ भी मैं अपडेट कर दूंगा, बट इसके चांसेस बहुत ही कम है. So that is it from my side. Stop loss लगा के रखना है, and yes, I have stopped using Zerodha Kite mobile application. Instead, I have started using website link of Zerodha Kite link. And thank you so much for watching this video. Please like the video if you really liked the video, and do subscribe if you haven't done it yet. Take very good care of yourself. Thank you.